silence and don't seek treatment for their condition. Mental health awareness is an important initiative to improve our understanding of mental health. It includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, act, and feel. It is important to raise awareness about mental health issues and to mobilize efforts in support of mental health. Over the course of 3 days, Psychology Department conducted activities such as selfie with sun, poster making, and lyric flash mob. Now, I would like to request HOD of Department, Dr. Suchi Chaudhary ma'am, to please hand a honorable guest with a potted plant. Students, it is my distinct pleasure to introduce our speaker for today, Dr. Chandrani Sen ma'am, Associate Professor in the Department of Psychology, University of Rajasthan, Jaipur. With over 23 years of experience in academics, she holds her expertise in the field of organizational behavior and positive psychology and contributed in the field with her research work. She has published more than 50 researches in international and national journals. And of the example when we say the beauty with the brain. Taking sessions by because it becomes boring for the audience, and I will make sure that you all don't get bored. And secondly, generally in sessions there is always a one-way process. So I would request you all to make this session as a very interactive session. The purpose gets defeated the moment I will come, deliver a lecture and say goodbye to you all. I have been a part of University of Rajasthan, and she has been a very brilliant image that is very important. I have not taught her, she was not there when I had joined university, but the image travels. So one pointer for today's discussion is your image gets carried from where you are now. So if Ayushi has an image of a brilliant student, is how she passed each day in university. So for you all, it is very important to carry your image from now. So आपकी हर दिन की एक्टिविटी, आपको पता है दीवारों के भी काम होते हैं. क्लास में कोई नहीं है पर आप हो, टीचर का वेट कर रहे हैं, टीचर आने में देर हो रहा है, या कोई भी किसी भी व्यस्तता से वो किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप क्लास में एकाग्रता से अपना काम करते रहेंगे. That day is also adding to your image building. So it is very important. Well, I have been called here for delivering interactive session with you all on mental health. And you all have read about mental health. So if we talk about mental health, this year there has been a theme. You all are aware of this theme? So it's a universal human right it talks about. And the moment we say about universal human right, am I audible this way? Or I get a hands-free mic? Okay, so immediately there is an attachment of stigma. And the moment stigmas are attached, the brain is wired to think negative about the upkeep of mental health. So, am I audible this way? Yes, ma'am. So I think my movement gets restricted when I'm only on podium and the interactive session gets a toss. So wherever you are unable to hear me, let me know. Okay? तो क्या होता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम यूनिवर्सल राइट की बात करते हैं और स्टिग्मा से रिलेटेड बात करते हैं, हमें लगता है कि ये दिनों तक उदास होते हैं, तो हमसे पूछा नहीं जाता कि आप उदास क्यों हैं, और अगर पूछा जाता है तो हमें बताने में संकोच होता है और हमें रीच आउट करने में संकोच होता है. पर अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है तो हम तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत जल्दी लेके चले जाते हैं. सो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग गैप बिटवीन अस and to the society. Now, I don't take you as a general student, I take you as a student
of Psychology, and you should take the ownership of spreading this awareness that what are the initial phases जिससे हमें लगे कि हमें अब reach out करने की जरूरत है. Anybody can tell about it? What is the initial symptoms जो कि हमें लगता है कि we need to take help? Can anybody say that? कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज में है. ये इनिशियल सिम्टम्स में क्या होता है? Losing interest in everything. Very good. Yes, better बोलो. Daily activities. Okay. Exactly. What all points you have said is there in the part as a books. And did you ever experience that it happened with any of your fellow mates? What did you say to them? What did you say? Go and meet a counselor? Go and meet a psychologist? Go and get checked with a psychiatrist? Did you say so? So what is the initial step as a growing, budding psychologist you all will be? So the moment you will see some, yesterday we had celebrated World Mental Health Day in our university. We had called psychiatrists there. And what did we find? That forgetfulness is one of the biggest reason of reaching to psychiatrist कि बहुत जल्दी भूल रहे हैं. So add on to this point, to all your points, that forgetfulness is up these days, and what is the baseline identification of illness is depression. So those who are depressed adolescents, they not only feel gloomy because it is life. Their one day is up, the other day is down. So you are down for how many days is important to note? Your fellow mates. And then कितना हम भूल रहे हैं. So forgetfulness is also an important point. Now it should not raise your anxiety कि मैं अगर भूल रही हूँ तो मुझे पक्का डिप्रेशन है. ऐसे ना करें. सिम्टम्स और सिंड्रोम में अंतर है. बट इस नेचर के बहुत सारे लोग आजकल साइकियाट्रिक सेंटर में जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा फॉरगेटफुल हो गए. सुबह का शाम का रात को हम भूल जाते हैं. अब देयर शुड बी नेचर ऑफ फॉरगेटफुलनेस. क्या भूलते हैं? क्या खाया है भूल रहे हैं, क्या सोचा था एक मिनट पहले वो भूल रहे हैं. अगर ऐसे चीजें हो रही हैं देन इट इज अलार्मिंग. सो टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इफ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी या कोई भी परेशानी से रिलेटेड आपसे कोई बच्चा बात करता है तो आप क्या कहेंगे, सुझाव देंगे कि कितने दिनों से आपके साथ ऐसा हो रहा है. और यू शुड स्पीक टू एनी ऑफ योर टीचर. Feel free to reach to a teacher first. If teacher is unable to attend your problems, then you can get to the Department of Psychology. And I'm sure the Department of Psychology in every institution caters to this community services and they would take care of your issues initially. And if it doesn't happen, then they can reach out to counselors or to psychiatrists. So first step is not reaching to psychiatrists unless and until there is a major deviations of your going off track of the routine. I hope I'm making it clear to you that how do you come out of the stigma and how do you approach people. So it starts from friends, it reaches to teacher, from there to psychologists, counselors in colleges, and from there to professional, and then there to psychiatrist. What is the stigma? Reaching to a psychiatrist is a stigma. So the moment you come out of the clinic of a psychiatrist and people see you face that stigma. So we all should realize that as physiology is important for us, so the main important is what is your mental well-being. So this is how we can differentiate and we know that what are the processes that we can connect. So I would request the head of the department along with the teachers here that you also should collaborate with psychiatric department. They should come and tell you that how as community doctors, psychiatrists and counselors can join hands together and work for this
कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब कंपोनेंट्स की अपकीप रखना बहुत जरूरी है। ये तो हुई बुकिश बातें, उसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कैसे करेंगे? सब कहते हैं अपना जर्नल लिखो, रात को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। ऐसा क्यों? Why to practice gratitude? Tell me. Anybody who can tell that what is the need of practicing gratitude? So, to a very normal baseline kind of interaction, I would want to say that mental health is an umbrella term. We have many subcomponents to it, but if we broadly focus those subcomponents, what three important aspects are very much punched is, one, your cognitive health. Very, very important. All mental disorders are multiplications of your thoughts. So what is important is your cognitive health. Cognitive, you all are well versed with the term complex mental processes, and basically it talks about thoughts. Now there is a federation and World WHO which says 80% of our thoughts are negative, 20% are 90% are repetitive. So those 80% thoughts are continuously repeated, and that is repeated with the, so replication is happening of negative thoughts. So what you have to do, you have to consciously think positive. Now हर कोई लेक्चर गुरु आके ये कह देते हैं थिंक पॉजिटिव. क्वेश्चन कम्स हाउ? आपका दिल मन बहुत उदास है और आपको कोई एक चीज बहुत हिट कर रही है, उस वक्त थिंक पॉजिटिव होना संभव नहीं है. कॉन्शियसली एफर्ट करोगे तो कुछ सोचोगे तो भी वही सोच वापस से घूम फिर के जिस पे मन उदास है उस पर आ जाता है. तो क्या करना बहुत जरूरी है? प्लीज एंड प्लीज, every day you need to work out for self. You need to stay active. You need to do exercise. Why do we need to do exercise? हर activity में there is a secretion of certain hormones. I'm sure, do you know what are happy hormones? बताओ hormones. Serotonin, oxytocin and dopamine, जो सबसे आम है. और आई एम श्योर आई हैव टोल्ड जिबिला ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग योर नेम, चितवन ऑल्सो, एंड आई एम श्योर आयुषी को भी ये कहा है कि यू ऑल शुड स्टे वेरी एक्टिव द एंटायर डे, एंड एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट योर डे विद मॉर्निंग एक्सरसाइजेस. ना बात मेंटल हेल्थ की कर रहे हैं और सीधा एक्सरसाइज पे चले गए, ऐसा क्यों? As I said, mental health is a process. Why do we do dental care? So that cavity नहीं आए, so that एक bad odor environment में नहीं जाए. तो हम dental care क्यों करते हैं? Cavity होता है तो थोड़ी भंजन करते हैं, रोज करते हैं ना. So mental upkeep रखने के लिए, have you heard about the term mental hygiene? So we have to really take care of our hygiene. So hygiene is not only adolescent body hygiene, but it is also about your mental hygiene. And mental hygiene के लिए कुछ mental food की जरूरत पड़ती है. और वो food क्या हुआ? सबसे पहले सुबह उठ के क्या हुआ? Exercise. Is first mental food to stay active for the entire day. Initial exercise करेंगे तो आप थकेंगे, फिर रोज करेंगे तो अगर आप जिस दिन नहीं करोगे तो you will miss it. And you will really miss it. Why? Because that rush in your body, तो एड्रेनलिन रश, कोई अच्छी मूवी, कोई किसी के साथ घूमने फिरने जाने पे, फ्रेंड्स के साथ जाने पे थोड़ी होता है. इट इज जस्ट, इट्स अ नॉर्मल, इट्स अ जनरल प्रोसेस. सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉग्निटिव हेल्थ की अपकीप करना बहुत जरूरी है, एंड यू हैव टू कॉन्शियसली थिंक पॉजिटिव, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज. एंड द मोमेंट इफ यू आर लाइंग डाउन वन ग्लूमी इवनिंग एंड इफ यू थिंक कि नहीं आज तो मन बहुत उदास है, शाम का वॉक स्किप करते, तो ऐसा कभी नहीं करना. तो क्या कहना है? शाम का वॉक करना है. ऑलवेज रिमेंबर, अ पर्सन हु इज जॉगिंग कैन नेवर थिंक. कैन यू थिंक व्हाइल यू जॉग? कैन यू थिंक व्हाइल यू रन? थिंक अबाउट इट. यू कैन नॉट. सो
your thought process gets a full stop when you are doing a rigorous. And one more important thing is you need to root your life with one game. जब हम गेम खेलते हैं तो हम गेम पे ही ध्यान देते हैं, हमारे थॉट्स गायब हो जाते हैं। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, एनी गेम will make you away from all the conscious thoughts that are piling, that are bundling every time. So this is a very conscious thing. So mental hygiene, daily routine has to be there. One more important point which has to be told to you all is body scanning. Have you heard about this term? Body scanning. And these days, body scanning meditation is one of the most popular meditative process. Now, it is very easy. किसी की जरूरत नहीं है. You will have to lie down, sit in a chair, close your eyes, rest this head position. और ये सिर्फ खुद नहीं करना है, अपने बाकी कोमेट्स को भी करवाना है. And from top to bottom, you feel your body and take care of your feelings. And if you do it, just to keep my words, do this, practice this only once at home today, in the evening. It's a matter of few minutes, but once you do and you feel the every part of your body, you will feel some ugly thoughts. There will be a feeling of certain bitterness. The moment you reach here, all your heartbreaks, all your hurts, all your pain, you are gonna feel it. And slowly and steadily you will get down and to the toe. This is a process. The moment you do this body scanning, conscious body scanning, over the period of time you will be your self healer. तो किसी हीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है. हम we can heal ourselves. Can't we heal ourselves? So you have to be your own healer first as a psychology student. Then you can heal others. For example, once you are doing this body scanning meditative technique, you can tell it to your family members also. Make them heal. But while you are doing it, don't think positive. This is a mindfulness activity that you have to understand that how your body is in a state which you are accepting. सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? We are looking ourselves other than self. उसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया. You won't believe. Least priority is we to ourselves. Least. What is maximum priority? Others. Therefore, our happiness is a basket which we have given to somebody else. अब वो अगले की इच्छा होती है वो हमें खुश रखे कि नहीं रखे. हमको क्या करना है? अपनी खुशी का खुद को चार्ज लेना है. Every psychologist, every clinical therapist, they will always tell you be resilient, be hardy, be positive. No, there is nothing which can work collectively for one individual. सबको अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ अपने बॉडी मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. Now with this body scanning, I would want to tell you all that there is a technique to identify your own body weakness. So this is known as body zoning. What is body zoning? That some part of your body is weak and susceptible to grasp stress. जैसे एग्जाम्स आते हैं तो पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है, कुछ नहीं, सर ज्यादा दुखने लग जाता है. या आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट आई फेस्ड एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ acute jaw problem. This jaw, acute. There is nothing majorly, but all of a sudden you develop that there is an acute jaw problem. So all your teething problem related to certain escalation of pain is all of stress. तो stress is inevitable. जब आपके नाम के आगे RIP लिखा हुआ आएगा, तब जाके आपका स्ट्रेस फ्री होगा. तब तक तो क्या है? You will have to
live with it. आज कैसा स्ट्रेस है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है. So you will have to understand that how do you cope with stress. सबके coping mechanisms अलग. How do you make choices in your life? And as a student, what should make your mental health upkeep? So as a student, you have to maintain your diary. कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट सुबह उठ के क्या काम आपको पता चल गया दैट यू विल हैव टू डिवोट 30 minutes to your exercise. And you can do an interactive session with your teachers, those who do their exercise and come for you to teach you, and to you all who will take the class while before you do a morning activity, just like your dental hygiene that you are maintaining. तो ब्रशिंग से पहले ही एक्सरसाइज हो जाना चाहिए. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्रैटिट्यूड करना है. सर क्यों? लास्ट क्यों? पहले क्यों नहीं कर ले सुबह? बताओ. लास्ट ये एक्टिविटी क्यों करना चाहिए ग्रैटिट्यूड? लोग कहते हैं डायरी रात को लिख के सोना चाहिए, जर्नल रात की होनी चाहिए. हाँ बच्चों, मैम पूरे दिन में जो होगा उसके लिए थैंकफुल होंगे, इसलिए रात को लास्ट. जरूरी नहीं है हम थैंकफुल जो हो रहे हैं वो दिन भर जो हुआ है उसी के लिए थैंकफुल हो रहे हैं. हमारा ब्रेन फ्री ऑफ थॉट्स हो जाएगा तो हमारी नींद भी काफी पीसफुल होगी. कभी ऐसा हुआ कि कोई थॉट की वजह से आपको नींद आने में दिक्कत हुई? कभी ऐसा हुआ? कितनी बार? काफी बार. बीच रात में नींद खुली? Now, the reason that why do we write journal in the night is because our subconscious mind is at process. Last activity is Thanksgiving. Last activity के बाद आप सो जाते हो. Your subconscious mind keeps active. And doing journal of gratitude, it is observed that your happiness index gets high. तो journal practice से क्या हुआ? आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लेजेंट चीजें हुई जिसकी वजह से आपका स्लीप पैटर्न भी बेहतर हुआ. और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट क्या हुई कि आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ओवरऑल, क्योंकि आपको याद है बचपन में कहते थे ना कि बच्चा अगर बहुत शैतान है उसके कान में कह दो कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है. ऐसे सुना क्या? ऐसा होता है. जैसे किसी मंदिर में जाके बोलते हैं कि गणेश जी के कान में कुछ कह. ऐसे जब बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब बच्चा बहुत शैतान बच्चा होता है वो सोए तो उसके कान में कह दो कि आप मेरा बच्चा बहुत शांत है. फिर इसे साइकोलॉजी में लाएंगे. सबकॉन्शियस माइंड गेट्स अ मैसेज दैट आई एम अ गुड चाइल्ड. एफर्मेशंस हमें कहते हैं जो साइकोलॉजी में देते हैं वो पॉजिटिव देनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से वर्ड्स पिक करता है, नॉट नहीं पिक करता. नॉट है तो नेगेटिवली वर्क करेगा. So you are giving a journal of affirmation which is going to work subconsciously, and then the outcome is what your happiness index is. So research has proven that 35% of your happiness index growth सिर्फ gratitude feel और लिखने से होता है रात को. And I told you the reason. How many of you know you have all said कि you have sleep problems? Do you know the power of naps? क्या है power? नैप पता है? नैप. व्हाट इज द पावर ऑफ नैप? कितने नैप्स लेने चाहिए दिन में? Except, did I ever talk about this mechanism of power nap? Can be taken 4 times a day. Can be ranging from 10 to 20 minutes and not more than 20 minutes. So power naps cannot be taken more than 20 minutes. And what is the role of this power nap? What is the role of the power nap? So you may not sleep for the entire night. It is okay. So you have to tell yourself and to your friends and whoever reaches you and makes you aware कि मुझे तो रातों को नींद ही नहीं आती है. So it is absolutely fine if you don't sleep for a night और आप दिन में 4 पावर नैप्स ले रहे हैं 20-20 मिनट के लिए. So it is
replenishing your deprivation of sleep. So see how power naps are important. What happens, this is a human mechanism, कुछ टाइम बाद हमारे जो cells हैं वो degenerate हो जाते हैं automatically. They are the growth cells and it gets degenerated. ये power naps जो हैं ये इन cells को वापस से replenish करता है और इससे अब कई लोगों को देखना जो रात को जिनको नींद नहीं आती वो दिन में नींद निकाल लेते हैं and then they want sleep in the night also. And lot of elderlies they complain that रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है. तो what you have to tell them कि क्योंकि ये जो you see elderlies they take a breakfast they go off to sleep, they take a lunch they go off to sleep, then they get up they have tea and then again they take a power nap. So those power naps are power pockets for our life and for our mental health. So what is important for us? If you don't sleep for a night and if you take those power shots, they are gonna help you as powerful as those 6-7 hours of sleep. So it is not important to sleep at a stretch only. So those power naps are very important. Specifically, your body would say कि अब मुझे नींद चाहिए और अभी तो नहीं चाहिए ना. So your body would say at some point of time कि आपने आँख खोल ही नहीं पा रहा. उस time don't punish your body. What you have to do? You have to just lie down for 5 minutes, not more than 15 to 20 minutes because the purpose of power naps, power shots goes at stake. फिर वो sleep हो जाता है. So those who were complaining कि हमें sleep में दिक्कत होती है, वो उस दिन power naps में है. So what did we learn today from mental health? That we have to take care of our mental hygiene. How do we take care of mental hygiene? By doing daily small activities that push our process of mental wellness. You have to do body scanning. Body scanning meditative technique, as I explained you, is very important technique, and for that you have to identify your body weak parts. आपके बॉडी में सबसे वीकर पार्ट कौन सा है. तो जब आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं उस स्ट्रेस को महसूस करते वक्त यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नाउ देयर कैन बी हेडेक ट्रिगर एंड व्हाई देयर इज अ ट्रिगर. सी देयर आर लॉट ऑफ लोकलाइज्ड पेन आवर बॉडी फील्स. जो पार्ट हमारा वीक होगा वही हमारा परसीव स्ट्रेस जो है उस लोकलाइज्ड पार्ट पे अक्यूमुलेट हो जाएगी और जब उस लोकलाइज्ड पार्ट पे अक्यूमुलेट होगी we will focus on the pain than the solution of the pain.